30-year-old IT professional Simarjeet is currently hunting for a used car. Simarjeet's original plan was to buy a new vehicle for his family, but given the constraints on his budget and his requirement for a vehicle for personal mobility, his next best option is to go for a used car. सिमर, आपने अभी कैसे डिसाइड किया कि आपको यूज्ड कार खरीदना है एट दिस पॉइंट? मेरे घर में मैं और मेरा एक एल्डर ब्रदर है और छोटी सी फैमिली है। अब हम दोनों ब्रदर एक ही लोकेशन में जॉब करते हैं। अब हमारे घर में एक सिंगल एक 2 व्हीलर है। अब उसमें कंसर्न ये था कि बाहर कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो एक दिन मैं जा रहा हूँ, अब एक दिन वो जा रहे हैं। हमें बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं कि हम अपनी जॉब कैसे कंटिन्यू करें। फिर इस अकॉर्डिंग हमने सोचा कि कहीं ना कहीं हमें इन फ्यूचर भी गाड़ी लेनी है, तो अब हम ले सकते हैं, न्यू नहीं तो सेकंड हैंड ले सकते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग हमने सोचा कि हम यूज़ कार एक बार ट्राई करें, क्या कंडीशन है, हमें जो हमारे फाइनेंशियल अकॉर्डिंग भी हमें बजट में मिल जाएगी। तो इसलिए मैं भी आया हूँ कास्ट 24 में देखने के लिए, ताकि मुझे भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ गाड़ी मिल जाए। तो हर कोई पर्सन अपनी सैलरी बजट उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ करता है। तो अब हमारी भी जिस अकॉर्डिंग कंडीशन है एज़ पर बजट, हम उसी अकॉर्डिंग अभी सेकेंड हैंड कार ही देख रहे हैं। करेक्ट। तो अभी आपका क्या बजट है, किस बजट में आप? बेसिकली देखिए, जनरल हमने पहले के हिसाब से सोचा था कि हम थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 3 से 4 लाख के बीच में देख रहे थे, बट अभी हम थोड़ा सोच रहे हैं कि कम से कम 2 से 3 लाख के बिटवीन अगर कोई है तो हम वहाँ इन्वेस्टमेंट कर लें। Cars 24 is witnessing a huge growth in demand in auto sector. Since the lockdown got over on 4th of May onwards, over week-on-week traffic inquiries and transactions are going up. Week 5 after lockdown got over, we already crossed our pre-corona level traffic, and within week 6 our transactions were back to pre-corona level. So we are already now into growth trajectory. In month of July we will going to hit more than 120% of our pre-corona level, which is a huge growth signal to the industry what we are seeing. Well, as demand for used cars grows to pre-COVID levels and likely to even surpass them in the near future, there were fears of a supply constraint. However, a study by Cars 24 says that of the 5% people who would generally sell their used cars for urgent liquidity, that number has now grown over 3 times to 14%. Now, tapping into this accelerated demand for used cars, major automakers are doubling down on organizing this market and sourcing pre-owned vehicles, not just from their own brands, but also other manufacturers. Volkswagen, for instance, says it is already selling as many used cars as new cars in the wake of the pandemic, which is the first for them in the country, and that it also aims to double the sales of used cars this financial year. The inquiry level, the asking of customers for used cars, has increased versus last year in the last 2 months. The used car business has increased from 2016 to 2019 around 29%. In 2022, I assume we will be 42% increase from this level of 19. So there will be a major jump from around 4 million cars to 6 million cars in the next 2 years. Now, even as the auto industry contends with the lull of even 2 to 3 years before a recovery is seen in the passenger car space, the focus quite clearly is on the used car market, which is growing even in these dull times. In New Delhi, Alisha Sachdev.